Assalamu alaikum. I hope everyone is doing well. My name is Akasha Shuaib, and for today's interview, we have the founder of Digital Melons, Mr. Asher Ali Mirza, with us. Assalamu alaikum, sir. कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। Allah ka shukr, sir. It's a pleasure to have you on the Founder Stories. Sir, we'll start with a very basic question. आप थोड़ा सा अपने background के बारे में बता दें, and what is Digital Melons really about? Sure. So as of everyone, बिल्कुल मैं I started my career as a MBBS student. I was becoming a doctor, fortunately or unfortunately. But जो है वो थोड़ा सा interest और थोड़ा सा ध्यान was toward digital marketing, towards performance marketing. और it was back in 2015-16 जब ये बड़ा boom था और पाकिस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चीजें आ रही थी। Obviously जो उस वक्त दोस्त थे या even family थी, they were not very educated about it कि ये क्या चीज है क्या चीज नहीं है. But since I lost my interest into the field of medicine, so I just decided to one day wake up and decided to start my career into that. तो अब तो खैर बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आर गेटिंग बोर्ड विद इट एंड दे डू अंडरस्टैंड. बट बैक देन इट वाज काइंड ऑफ अ मिथ कि यार फेसबुक पे टाइम ज़ाया होता है या सोशल मीडिया पे टाइम ज़ाया होता जी है. बट बिल्कुल. उस वक्त मैंने स्टार्ट किया एंड एज ऑफ एवरीवन आई चोज द वेरी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इट. मैंने जब ड्रॉप आउट किया आई took admission into media sciences, into advertising. Okay, I am a very pro degree person, not like a lot of people preaching these days. So, bilkul, I took admission. I started doing an internship in a company which was doing digital marketing back then. Internship से फिर job और job से फिर promotion होते होते in 4 years my last position was senior vice president of a firm. तो बड़ी 6 डिजिट सैलरी थी, गाड़ी थी, सब कुछ था. बट ऑब्वियसली जॉब इज अ जॉब एंड बहुत सारे फ्लॉज होते हैं जब आप एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं. यू वांट टू इम्प्रूव देम एंड व्हाट यू थिंक इज कि यार मैं अपनी एक चीज स्टार्ट करूं तो आई विल इम्प्रूव ऑन दैट. फिर पाकिस्तान में देयर वर अ लॉट ऑफ एजेंसीज, जो बड़ी एजेंसीज थी या बहुत छोटी एजेंसीज थी. तो either the agencies they worked with very big brands or very small people. तो जो मिड के लोग थे या वो लोग थे वो नहीं कर पा रहे थे. और एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था विच इज अ वन विंडो सोल्यूशन जहाँ पे आप एक प्रोडक्ट सोच के आते हैं, यहाँ पे एक एप्लीकेशन का आइडिया लेके आते हैं या एक प्रोडक्ट आइडिया लेके आते हैं एंड जी दैट कंपनी और दैट thing provides each and everything, whether it's packaging, it's design, it's an application, it's a website, and the end goal आपका marketing और sales होता है या leads होता है. So जी then I founded this around 2 years back with one other guy that was also a software engineer, and he looks over the IT side of things and I look over the marketing side of things. So I was doing performance marketing. Performance marketing, for your viewers, is basically the paid ads that we run on the internet, whether it's Google ads, Facebook ads, Snapchat, TikTok, LinkedIn, whatever it is. तो जहाँ भी पेड एड चल रहे होते हैं, the guy who does that is a performance marketer. So professionally I'm that, and the company it deals with, it's basically not a digital agency, it's not an advertising agency, but we are an ad tech agency which does all the development or the IT side of it and all the advertising or the marketing side of it. And I started with 2 people, and now we are alhamdulillah around 40, and with a team of uh, developers, graphic designers, content writers, performance marketers, and everything. So we deal right now. We are dealing both in Pakistan, the US, Canada, UAE, and like 6-7 countries. We do have clients all around the globe, you can call it. So yeah, that is what's been happening with digital Melons. perfect. That sounds really interesting. अच्छा sir, so how did you obtain the initial resources or the capital to start the business? अच्छा, when we started it was basically bootstrap. थोड़े से पैसे मेरे पास थे, थोड़े से पैसे दोस्त के पास थे, जो कि एक अच्छी सैलरी थी जो कि ओवर टाइम जो है जमा की हुई थी और इसी दिन की निश्चित की हुई थी. when we जी start जो resources थी, the initial 2 guys that joined was working with me in the company that I was working with. तो वो वहां से ऑन बोर्ड हुए थे. एंड उसके बाद जितने लोग आए वो ऑब्वियसली अच्छा, आई बिलीव इन
the formation of company and everything. So when we were 6-7 people, we onboarded an HR person और फिर उनके through hiring हुई सारी. But the initial resources, they came with me bootstrap, and later on we had around 6 months back, we onboarded 2 VCs that are from the same fintech space, और अभी वो हमारे साथ हैं, which are helping us in the scaling part of it and the, you know, taking it a step further. So that has been the journey. Perfect. Acha sir, what are the current strategies that you people are using to market your business? We do market in a lot of ways. Since we are itself, Yeah. a core performance marketing agency, so that is not, the major pain point that we have, because technically we are helping other people do it. So what we do is we do Facebook advertising. We run a lot of campaigns across Pakistan on Facebook. We do Google ads. We do SEO, we do, Instagram stories, Instagram ads, LinkedIn ads, and LinkedIn organically as well. So we do use the same techniques for us as well to gain the traction and gain the clientele. Perfect. Acha sir, what you must have faced some challenges in the start, obviously, when you were first starting out. So how did you manage to overcome them? Exactly, yes. पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जब बहुत सारी चीजें आसान है, वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस लाजमी होते हैं. फॉर एग्जांपल फाइंडिंग गुड रिसोर्सेज, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इट डज लैक अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई डू टेक 3 इंटरव्यूज डेली ऑलमोस्ट. रोज का काम ही अभी एक इंटरव्यूज लेने और लोग ऑन बोर्ड करना है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ gap between the skills that the companies want or the people want, and the skill the people have that are coming fresh out of the university, because a lot of people that I take interviews cannot even make a PPT to give in front of someone. So unfortunately ये एक बड़ा मसला आता है to find good resources. But on the same hand, there are a lot of people whom you just you meet and you are impressed by them कि यार अच्छा है. फॉर एग्जांपल इन द आईटी स्पेस, इन द डेवलपमेंट स्पेस खास तौर पे, तो बिल्कुल ऐसा भी है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी होते हैं. फिर पाकिस्तान में थोड़े से जो है रजिस्ट्रेशन के मसले, थोड़े से वन विंडो ऑपरेशन ना होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, ओपनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट, पार्टनरशिप्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑब्वियसली हमने पहले नहीं किया था. वी डिड. हम लोग एक ऐप जरूर बना सकते थे, हम लोग एक बहुत अच्छी कैंपेन जरूर चला सकते थे, बट हम बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते थे जाके. दैट वाज अ प्रॉब्लम दैट वी फेस. लेकिन एज यू गो इवेंचुअली आप चीजें सीखते हो एज यू गो अलोंग द वे. तो वो कुछ दोस्तों की हेल्प ले लेते हैं, कुछ हेल्प ली इधर उधर से, और फिर पता चला कि यार अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है. तो यह हो जाता है. थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी चीजें आना करनी पड़ती है, बट इन द एंड इवेंचुअली यू डू मेक इट इफ यू वांट टू. तो या Exactly. Perfect. that Acha sir, so like you just mentioned that now you are a team of 40. So how would you explain your team building process and how do you keep motivating your employees? That is, a very difficult thing to do, but I do certainly believe in कि आप बड़ा. I've never been. I try to, but sometimes करना पड़ता है मजबूरी में. Never be a boss, but to go to the office regularly, sit with my people, sit with the people that are working for me, चाहे वो कोई भी हो. We do give, क्योंकि देखें मैं जो मानता हूँ हमारी फील्ड की स्पेसिफिकली हर जी. नॉलेज इज बेस्ड ऑन द इंटरनेट. Hmm. तो हम कोशिश ये करते हैं कि अपनी रिसोर्सेज को साथ साथ ट्रेन भी करें काम करने के. अ लॉट ऑफ पीपल जो हमारे पास शायद 1 साल पहले इंटर्न से आए थे, एंड राइट नाउ दे आर अर्निंग माशाल्लाह 3-4x मोर देन 1 साल में 3-3 दफा दे गेट द इंक्रीमेंट्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज दे आर लर्निंग अलोंग द प्रोसेस. जो वीडियोस हमने देख के सीखा वही That's कोर्सेज वही चीजें हम उनको देते हैं. तो इस तरह से इट वर्क्स. सेकेंडली वी डू हैव अ गुड कल्चर. अब ऑब्वियसली बात है, एम्प्लॉय कैन टेल यू बेटर. ऑब्वियसली मैं तो अच्छे ही समझूंगा, बट या आई डू बिलीव इन कि जो चीजें मैं पहले देखते हुए आ रहा था कंपनीज में जो कि नहीं होनी चाहिए थी वो ना हो, और जो चीजें होनी चाहिए थी वो हो. तो दैट वाज आई बिलीव इन, क्योंकि इसी फील्ड से हैं, इसी फील्ड से हमारा भी ताल्लुक है, तो हम जो देखते हुए आए थे कोशिश करते हैं कि वो इम्प्लीमेंट करें. that's brilliant. Acha sir, lastly, I would like to sum up with what advice would you give to someone who's trying to become an entrepreneur?
My only advice is कि पहले सीखें किसी भी काम को करने से पहले. The path that people are following right now is a lot of it preach also कि मतलब जरूरी नहीं है बिजनेसमैन आपको बनना है तो आप जो है फ्रेंच फ्राइज का ठेला ही लगा लें कहीं पे और आप बोलें कि अब मैं बिजनेसमैन हूँ. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स अनफॉर्चुनेटली. पढ़ें, उस फील्ड के बारे में कुछ पढ़ें जाके, डू अ कोर्स, डू अ डिग्री, डू डू समथिंग, क्योंकि वो आपको बहुत चीजें सिखा रही होती है. टेक द लॉन्ग रूट, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें, बिकॉज वो शॉर्टकट में जो चीज बनती है फिर इट इवेंचुअली कम्स डाउन. टेक द लॉन्गर रूट और अपडेटेड रहें, खास तौर पे डिजिटल एज के अंदर, हमारी फील्ड के अंदर खुद भी आपको अपडेट रहना पड़ता है. फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी भी कोर्स की पूरी लिस्ट है जो मैंने करना है इस महीने. हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, तो अगर आप अपडेटेड रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि नो वन कैन कम एंड मेक अ फूल आउट ऑफ यू. और टेक योर एजुकेशन वेरी सीरियसली. डू योर एजुकेशन, मास्टर्स करें, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा. हो सकता है 4 साल में आपको आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में कुछ सीखने को ना मिले, बट आपको एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाना आ जाए, या आपको जो है कपड़े पहनने आ जाएं, या आपको जो है वो कोई टीचर कोई ऐसी बात सिखा दे. तो आई ऑलवेज डू प्रेफर दैट. बड़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग और बड़ी अजीब सी बात है, बट या जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है. तो और ये है कि शुरू करें, ना कि सिर्फ सोचते रहें. बहुत सारे लोग चाय की होटल्स पे हमारे यहाँ रोज 10 बिजनेस बनते हैं और 10 बिजनेस तबाह भी हो जाते हैं. जी तो जरा कोशिश करें कि उसकी जो है एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं जल्द से जल्द, रादर देन कि वो प्लान जो है सिर्फ वर्ड फाइल और गूगल डॉक्स पे रह जाए. तो कोशिश करें, जस्ट गो आउट देयर एंड ट्राई टू डू व्हाट यू डू, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा फेल ही होंगे आप, और इसमें कोई मसला नहीं है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा इवन इफ यू फेल. Perfect. Thank you so much, sir. We got really brilliant advices from you. I'm sure आज काफी youngsters को एक inspiring outline भी मिल गई होगी from your whole story. That's all for today. Thank you everyone for watching. Stay tuned until we're back with another episode of the Founder Stories. For more updates, you can sign up at startupinsider.info. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.